to write regarding two reactions. One was pyrolysis and the other one was isomerization. Did you guys write these two? Amna, Akif, Khatija, Rishita, and Khuteja? No, sir. No. Yeah, leave some space, and this is you have to do this on your own. Okay, you just need to open the NCERT textbook. In that, you will see reaction with pyrolysis. You will read that, and then you will read for the isomerization. And the only skill that you need to have is to identify when pyrolysis is happening and when isomerization is happening. That's the only skill. So when you look at the reactant and the product, you will clearly identify when it is pyrolysis and when there is isomerization. ठीक है? तो उसके ऊपर आप प्लीज थोड़ा काम कीजिए. Moving on. In today's class, we will be talking about alkenes. Okay. Also, guys, can you please turn your cameras on, and then we will start the class. Okay, Brishta. Amna. Yes, sir. You can't turn your mic on. Khadija and Khudeja. See, before I move on to alkenes, those who they look at the NCERT textbook, they will see there are two topics जिनको हम साथ में पढ़ाएंगे. I will not be talking about these two topics right now. एक तो आपका है, एक टॉपिक का नाम है conformers. And conformers, it is related to alkane. ठीक है, for alkane और geometrical isomer of alkene. ठीक है. So these two topics are there after alkane, but we will talk about these topics at the end. Right now, we will be talking about the pattern that we had with alkene, method of preparation, physical properties, and chemical properties. ठीक है. So we saw the method of preparation of alkenes, the physical property of alkene, how the boiling point and solubility differs, and then we will look at the chemical properties, that means chemical reactions. Same thing we are going to do for alkenes also. So we will start with the methods of preparation of alkenes. अच्छा, alkene है, बस आप एक चीज लिख लीजिएगा. Alkene, the general formula is CnH2n, है ना? CnH2n, and then you will write one more point. Hydrocarbon with at least one sp2 carbon is alkene. ठीक है, एटलीस्ट उसमें एक sp2 कार्बन होना चाहिए. You can have all the other carbons as sp3, but उसमें एक sp2 कार्बन होना चाहिए. After that, you will write the topic. Method of preparation, MOP, of alkenes. In method of preparation of alkenes, the number one is from alkynes. Now, alkynes is carbon with triple bond. So if you have, see here guys, if you have carbon triply bonded with another carbon, and this carbon atom, it has, let us suppose, R1, and this carbon atom has R2. So these are the four bonds. तीन तो उसके पास कार्बन के साथ है, and the other two bonds are with R1 and R2. ठीक है. Now, if you react this alkene with H2, and it is in the presence of palladium over charcoal over carbon, then what do you get? You get carbon, double bond carbon, and the groups will be attached like this. अब आपके पास यहाँ पे होगा R1 and R2. Hydrogen will be on the same side. So this type of alkene, in which यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कार्बन एटम्स में आपको देखना, ठीक है ना? यू हैव टू लुक एट द कार्बन एटम्स. डबल बॉन्ड में ऐसे किया आपने R1 R2, और नीचे क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन. तो आपको क्या मिला? सेम मिल गया. So here you call that, this type of alkene are known as, please write, cis alkene.
ठीक है, जब हाइड्रोजन क्या मिलते हैं आपको ऑन द सेम साइड, हाइड्रोजन इज अटैच्ड ऑन द सेम साइड, एंड इफ यू डू द सेम, if you do if you take the same reactant and react it with sodium in the presence of liquid ammonia, liquid NH3, then you get, so, carbon doubly bonded to carbon. Here you have R1, here you have R2, here you have hydrogen, and here you have hydrogen. So when same groups are attached at 180 degree, ना देखिए, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के अपोजिट में क्या है, हाइड्रोजन, तो सेम ग्रुप्स आर अटैच्ड एट 180 डिग्री, then in that case you will call this trans alkene. ठीक है, सो एक सिंपल डेफिनेशन देखिए, हाइड्रोजन के अपोजिट में R2 और R1 के अपोजिट में हाइड्रोजन, सो यहाँ पे आपके पास देर आर नो सेम ग्रुप्स अपोजिट टू ईच अदर, है ना? इस वजह से, आई मीन यू कैन आइडेंटिफाई इट लाइक दैट, दिस इज सिस alkene, एंड व्हेन यू हैव सेम ग्रुप अटैच्ड टू, सेम ग्रुप्स आर एट 180, इसको बोलते हैं ट्रांस alkene. प्लीज राइट दिस डाउन. Done guys, this one please tell me. Yes, sir. Write down the products. Okay, I'm going to give you 3 questions. Take 4 minutes for this question. So if it's on the same side, it doesn't matter which side, right? नहीं, Like up आप or डबल down? बॉन्ड पे, हाँ आप डबल बॉन्ड पे लाइन लिख दीजिएगा और फिर उसके बाद साइड देखिएगा, ठीक है ना? ठीक है, देखिए साइड में ना थोड़ा सा आपके पास कभी कभी कंफ्यूजन भी हो सकता है. वेट अ सेकंड. ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको क्या लग रहा है, दिस इज सेम साइड. Hey, yeah, but नो. if according to the like हाँ line हाँ which you told us to draw, हाँ, ये लाइन रहेगा, ठीक है. दिस इज द लाइन दैट यू हैव टू सी. फाइन. yes, sir. डबल बॉन्ड में आपको देखना है, डबल बॉन्ड में लाइन बना के सेम साइड आपको देखना है.
Once you're done, you will send the answers on my WhatsApp. Guys, please send whatever you have done. Okay, please send me whatever you have done. Yes, sir. Send them. अच्छा, क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया हुआ है आपने, रिशिता? Sir, I wasn't sure about it. First one, it is correct. Hydrogens are on the same side. और फिर second case में भी hydrogen on the same side. Yeah, it's correct. Very good. यार रिशिता, आपने ये नहीं लिखा. Hydrocarbon with at least one sp2 carbon is alkene. Ah, No, आके it's very wrong. देखिए आके, Okay, sir. I'll do again. नहीं नहीं नहीं, देखिए इधर देखिए. Here you have carbon triple bond ना, तो इन दो कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड. Now this carbon it already had CH3, so that CH3 will be as it is. This carbon already had a hydrogen, that hydrogen will be as it is. और दो नए हाइड्रोजन on the same side like this. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Especially Akib. Yes, sir. Got Yes, it? sir. See the next Yes. one. इस केस में बताइए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है? Okay. Now this Yes, sir. carbon will have what group? Tell me. In the top, It's 3. CH3. और इसमें On टॉप नहीं right, होगा ना, CH3. और नीचे दोनों And दोनों में H. Hydrogen. हाइड्रोजन. दिस इज ओनली बिकॉज वी हैव H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ओवर चारकोल. ठीक है, PD ओवर चारकोल. Yes, sir. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट केस. जो अगला सवाल है आपका, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. इसमें बताइए हाइड्रोजन कहाँ लगता है, सेम साइड या फिर Opposite अपोजिट? sides. हाँ, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पे यहाँ पे क्या लगेगा, CH3. CH3. एंड Then hydrogen. यहाँ पे हाइड्रोजन, उसके बाद फिर से हाइड्रोजन. यहाँ पे हाइड्रोजन, नहीं नहीं, लेफ्ट में हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन एंड देन CH3. और राइट में CH3. गॉट इट? Yes, Actually, sir. please copy this down. I will give you guys 2 minutes for copying this. Then I will move on to the next method of preparation.
Sir, can you scroll up for a second? कितना? The first line, sir, the sentence. Hydrocarbon with at least one sp. Yes, sir, right. Sir. I will be starting the new topic once the 2 minutes are over. Right, next. From alkyl halides. From alkyl halides. Now, this reaction, इसके दो और नाम होते हैं. It is also known as dehydrohalogenation and it is also known as beta elimination. Beta elimination reaction. Now, what happens in this reaction? Please see. So, you have carbon atom and another carbon atom. तो यहाँ पे आपके पास this carbon has 3 hydrogens, let us suppose. और यहाँ पे आपके पास there is a Br group or any halogen atom. ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई भी halogen atom है. And this carbon atom has some other groups. है ना, hydrogen अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिया है. The reagent that we are going to take, one of the most important reagent is alcoholic KOH. We can take some other things also, but generally आपको मिलेगा alcoholic KOH. In the presence of heat, what happens? Now, बताइए तो KOH क्या है? एसिड है, बेस है, क्या ख्याल है आपका भाई? KOH is बेस, है ना? Yes. बेस का काम क्या होता है? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना. करेक्ट है? It will Yes, go sir. and it will take the hydrogen. So what happens? This alcoholic KOH से OH negative आता है. अगर OH negative नहीं रहता, बेस मान के चलिए अभी आप. नेक्स्ट जो 12th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़िएगा. और बेस जो है ना, दिस बेस इट अटैक्स ऑन द हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को ले लेता है. Now, when the hydrogen is going away, hydrogen is going away without the electron. It will leave the electrons. The electron will move here like this. And then, as the double bond is formed, this halogen atom will also leave with the electrons. तो आपको क्या मिलेगा? Pc. कार्बन और ये दो हाइड्रोजन है मौजूद, तो these two H2 doubly bonded with carbon and the other hydrogens like this. Plus you will get water because OH negative. खैर वाटर आपको इतना जरूरी नहीं याद रखना. उसके बाद KX है ना, plus KX. Important thing is that you have to remember this. Alkene is being formed. So what is the halogen that we can have? Halogen that we can have is chlorine, you can have bromine, or you can have iodine. These halogens you can have. ठीक है. For example, ये आपके पास एक example हो गया. For example, you have 2 carbon atoms and then you have 3 carbon atoms, let us suppose, and then you have a bromine atom like this. ठीक है. तो प्रोडक्ट कैसे बनाना उसके लिए हम आपको बताते हैं. You will have alcoholic KOH. How to make the product you will see here, okay? With some heat. अल्फा कार्बन बीटा कार्बन याद है आप लोगों को? अल्फा अल्फा कार्बन, व्हाट इज एन अल्फा कार्बन? ये सृष्टा अल्फा कार्बन पता है? नहीं, अल्फा कार्बन नहीं याद किसी को? अरे अरे रे, अल्फा The कार्बन नहीं पता. one, the one which is connected to the like another functional group. हाँ करेक्ट, वेरी गुड, बहुत सही. फंक्शनल ग्रुप. तो यहाँ पे आपके पास क्या है? बी आर हो गया फंक्शनल ग्रुप, राइट? तो उससे कनेक्टेड कार्बन क्या हो गया? अल्फा. एंड उससे कनेक्टेड कार्बन हो गया बीटा. ठीक है, अल्फा एंड देन बीटा. मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस. आमना, आखिर, रक्षिता, खदीजा एंड खुदैजा. यस Yes, और नो sir. गाइस प्लीज टेल मी. खदीजा एंड खुदैजा, आप लोग ना बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं करते. क्या ही समझ में आएगा आप लोगों को क्लास में? सही है, अल्फा एंड बीटा. ठीक है, ध्यान दीजिए.
तो आपको क्या करना है, अल्फा से Br निकालिएगा, अल्फा से हाइड्रोजन, यू विल रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्फा, और बीटा से हाइड्रोजन निकालिएगा. राइट नाउ यू डोंट हैव टू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा बिकॉज वी डोंट शो द हाइड्रोजन इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स, राइट? सो व्हाट यू विल डू, अल्फा से बस आपने Br निकाल दिया और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया. एक सेंस, yes or no, प्लीज टेल मी गाइस. बात Yes, समझ में आ sir. रही Can है? you repeat that? Remove hydrogen atom from the alpha, okay, and remove hydrogen from the beta, fine, and make a double bond between alpha and beta. Make sense? Yes. है ना? Yes, sir. In bond line structure, we don't show hydrogen, no? So you don't have to actually remove, but आपको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है? So please write. Remove halogen from alpha, hydrogen from beta, and form alpha double bond beta. बात समझ में आ रही है? अल्फा डबल बॉन्ड बीटा समझिए ना, कार्बन, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है? अब इसको लिख लिया आगे तो प्लीज रेज योर हैंड. इफ यू हैव रिटन दिस, प्लीज रेज योर हैंड. वेटिंग फॉर रिश्ता एंड आकिब. डन. ठीक है, ध्यान से देखिए. इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है, टेल मी गाइस व्हिच इज द अल्फा कार्बन. The 1 2 down 3 one, two, Two. व्हिच वन इज अल्फा कार्बन? Two. Two. two, 2. 2 ना, ठीक है. ठीक है, 2 इज द अल्फा कार्बन. व्हाट इज द बीटा कार्बन? either one or three. 1 and 3 both are beta carbons. Yes or no, please tell me guys. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बट आई होप यू कैन सी दैट बोथ ऑफ दीज आर व्हाट, दे आर सेम ओनली. बट फिर भी हम आपके लिए अभी क्या करते हैं, बीटा 1 बीटा 2 लेके चलते हैं. ठीक है ना, बीटा 1 और ये बीटा 2 है. Now, if you are having beta 1 and beta 2, then when you react this with alcoholic KOH, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे एंड सम हीट. आपको एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यू विल मेक 3 कार्बन एटम्स, अल्फा और बीटा 1 के साथ एक बार, और दूसरा अल्फा और बीटा 2 के साथ. बट एज यू कैन सी बोथ ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर सेम. ये दोनों ही क्या है, prop 1 ene है. Both of these structures are same. Both of them are what, propene. But this is not, मतलब ये आपके पास सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द केसेस. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास you have something like this. You have 4 carbon atoms, and then here you have Cl. Now please see and tell me which of the carbon is alpha carbon. 1 2 3 4 में Two, second, हाँ वेरी गुड, सेकंड कार्बन इज अल्फा कार्बन. और बीटा कार्बन कौन सा है? one or three. 1 and 3, और नहीं बोलेंगे, 1 and 3 बोथ ऑफ देम आर बीटा. ठीक है,
तो 1 and 3 को थोड़ा सा हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज 3, दिस इज बीटा 1, ठीक है। अच्छा ये बताइए, बीटा 1 जो है 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री? बीटा 1 इज कनेक्टेड टू हाउ मेनी कार्बन एटम्स डायरेक्टली? 1, 1. तो ये 1 डिग्री हो गया। और ये बीटा 2 है, ये कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है? हाँ, 2 से कनेक्टेड है ना 2. डायरेक्टली, ठीक है। दिस इज 2 डिग्री, ये ध्यान रखना है आपको। अब उसके बाद आपके पास दो प्रोडक्ट मिलेंगे, 4 कार्बन एटम्स बना लिया आपने, एक बार बीटा 1 के साथ और दूसरा बीटा 2 के साथ। बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट ना, ये आपके पास ब्यूट 1 इन है, ब्यूट 1 इन, एंड दिस इज ब्यूट 2 इन। अब मेजर क्या होगा? तो जो ज्यादा डिग्री वाला है ना, वही वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक है। सो व्हेन यू हैव अल्फा एंड 2 डिग्री, ठीक है, अल्फा एंड 1 डिग्री वाला माइनर, एंड दिस विल बी मेजर। गॉट इट? कैसे आइडेंटिफाई करना है सोनो प्लीज टेल मी, ठीक है। Yes, sir. पहली चीज तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, दैट यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर गेटिंग 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको। अदर थिंग दैट यू हैव, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपको 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक, उससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, आइडेंटिफाई करना दैट व्हाट आर द बीटा, 1 डिग्री, 2 डिग्री या क्या डिग्री है, एंड द बीटा विथ हायर डिग्री विल गेट अ डबल बॉन्ड, बीटा विल विथ हायर डिग्री विल गेट अ डबल बॉन्ड, और वही वाला बीटा क्या होगा, मेजर होगा। मेक सेंस? यस नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. Major product will be the alkene with a double bond between alpha and that beta which has higher degree. Make sense? Please tell me, guys. Yes, sir. Yes. ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? तो फिर प्लीज रेज योर हैंड। Raise your hand once you're done writing. Write quickly. Let me know once you're done. देखिए, आप लोगों को ना एक चीज हम बता रहे हैं, आप लोग प्लीज ना ऐसे लेजीनेस मत दिखाइएगा, आप लोग इस तरह से प्रोडक्ट बनाइएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई दी अल्फा, बीटा 1, बीटा 2, उसके डिग्री, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आपने Yes, ये sir. सारी चीजें नहीं किया तो फिर मिस्टेक्स होने के चांसेस, आप बिल्कुल ये भरोसा मत रखिए कि आपको देख के प्रोडक्ट आ जाएगा, यू विल हैव टू वर्क ऑन इट। जैसे मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन होते हैं ना, आपको अगर हम बोले 356 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो दिस इज इजी और हार्ड? टेल मी, रिशिता, आकिब, गाइस टेल मी, दिस इज इजी और हार्ड? Normal. इजी है भाई, ये नॉर्मल क्या होता है, क्लास सेकंड थर्ड में आप लोग कर रहे होगे ये, है ना, सिंगल डिजिट का लेकिन देख के करना थोड़ा मुश्किल है। इट विल बी बेटर इफ यू व्हाट, इफ यू राइट दैट डाउन एंड देन मल्टीप्लाई इट, है ना।
तो वैसे ही बिल्कुल है ये भी, these all of these things in organic chemistry are easy, but you have to write some stuffs and you have to work on that problem. I will give you a few questions. देखिए उसमें अल्फा बीटा कम से कम करके रखिए आप लोग, ठीक है? यू हैव टू राइट ऑल दी प्रोडक्ट, मेजर माइनर जो भी है उसको आइडेंटिफाई करके, ठीक है? सो प्लीज सी हियर गाइस। देखिए आपके पास अभी भी सेम सेम ही चीज है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द अल्फा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द बीटा। बीटा में जो भी ज्यादा डिग्री वाला है वो मेजर होगा, जो कम डिग्री वाला है वो माइनर होगा। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी बीटा रिप्रेजेंट। सेम चीज करना है आपको, स्ट्रक्चर से बिल्कुल नहीं घबराना है, सिंगल सिंगल स्टेप्स है, उनको प्लीज कीजिए। एंड आई विल गिव यू गाइस 5 मिनट्स, 4 मिनट्स आई थिंक विल बी इनफ। अच्छा प्लीज डू दिस क्वेश्चन, आई विल बी बैक, ओके? प्लीज कीजिए इसको, आई विल बी बैक। Yes, sir. You guys have like 1 more minute.
Guys, time is up. Can you please send me whatever you have done? Yes, sir. Guys, please send me whatever you have done. Keep looking at your answer. Sir, is it wrong? No, I'm just looking. Okay, sir. फर्स्ट वाला तो सही है आपका, लेकिन आपने देखिए रिएक्टेंट सही से बनाया नहीं है। देखिए द क्वेश्चन दैट आई गेव यू और जो क्वेश्चन आपने लिखा है, कैन यू सी द डिफरेंस? So the second and the third one, do I just keep it in the cyclic form or? नहीं नहीं, कीप इट इन द साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म में ही रखना, उसको तोड़ना कोई ना है आपको। देखिए आपको क्या करना होता है, मैं बता दें, दैट्स इट। अल्फा और बीटा आइडेंटिफाई कीजिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाला खेल कीजिए, बस दैट्स इट। ऑल्सो थर्ड वन में आपका मेजर प्रोडक्ट गलत है। यू हैव आइडेंटिफाइड द बीटा आके बस फॉर यू है ना। आपने थर्ड वाले में बीटा टू तो सही आइडेंटिफाई किया है, बट आपने डबल बॉन्ड देखिए किसी और चीज के साथ बना दिया है। Okay, sir. अल्फा और बीटा टू का बनेगा ना, आके मेक सेंस, समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक है, उसको ठीक कीजिए। और फर्स्ट Yes. वाला सवाल सही नहीं है, आपका सवाल ही गलत लिखा आपने, बट वट एवर क्वेश्चन यू हैव रिटन अकॉर्डिंग टू दैट योर आंसर इज करेक्ट। आमना, रिश्ता, अरे खदीजा खुदीजा आपको तो कुछ नहीं भेजते भाई। ऋषिता प्लीज सेंड इट क्विकली ना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। Yes, sir. One second.
What happened, Rishita? Sir, I didn't do the last. I didn't do it in. नहीं आप भेजिए ना, whatever you have done, send it to me. It's better than describing what you have done. Send it to me. पहले वाला देखिए, आपने भी स्ट्रक्चर ही गलत बनाया है तुषिता। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए हमने क्या लिखा और आपने क्या लिखा है। Sir, I did the first one. One second. यार देखिए, छोड़िए अभी छोड़िए, देखिए अब इतना टाइम तो हम नहीं दे सकते ना इतनी छोटी सी चीज को। 3 सवाल थे उसमें 15 मिनट 10 मिनट चला गया है। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा 1 एंड दिस इज बीटा 2। बीटा 1 is 1 degree, beta 2 is 2 degree. So I will make everything as it is except the bromine. उसके बाद अल्फा और बीटा 1 में डबल बॉन्ड कर दिया हमने। Then in the second, what I will do, I will make everything as it is except the bromine. और अल्फा और बीटा 2 में हमने डबल बॉन्ड कर दिया। Obviously this will be minor and this is major because higher degree. In the second case, if you see, this is my alpha carbon, here is my beta 1 and here is my beta 2. Also you can see that both of these beta are 2 degree and both of these beta are same. दोनों में कोई फर्क नहीं। सो इफ यू सी बोथ ऑफ योर एल्कीन्स व्हाटएवर यू गाइस हैव मेड, आके बन रशिता, दोनों ही एल्कीन सेम है। इट इज साइक्लोपेंटीन। सो यू कैन मेक ओनली वन प्रोडक्ट, इट डजंट मैटर, बट बोथ ऑफ दीस प्रोडक्ट आर व्हाट सेम। अल्फा और बीटा 1 के साथ हो चाहे अल्फा और बीटा 2 के साथ हो, इफ यू आर गोइंग टू राइट द नेम, दैट नेम विल बी व्हाट, साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंट 1ene. In the third case, we see this is the alpha carbon, then we have the beta, this is beta 1, this is 2 degree and this is beta 2. This carbon is 3 degree connected with 3 carbon ना, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। So अब आपके पास 2 प्रोडक्ट मिलेगा। You will write everything as it is except the iodine. आयोडीन ने लिख के आपने सब कुछ लिख दिया। अल्फा और बीटा 1 के साथ डबल बॉन्ड प्लस विल राइट एवरीथिंग एज इट इज, और फिर अल्फा और बीटा 2 के साथ डबल बॉन्ड लाइक दिस। ठीक है, सो दीज टू विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे तो आपने ये CH3 पता नहीं उड़ा दिया है। ठीक है, यू हैव टू राइट एवरीथिंग एज इट इज, रिमूव द हाइड्रोजन एटम एंड देन फिर अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। Yes, sir. Write down the products quickly. इसमें मेजर में दिस विल बी मेजर, डन गाइस। देखिए आप लोगों ने इसकी Yes, क्वेश्चन sir. देखिए। तो जो हमने ये चीज लिखी है ना कि अल्फा और बीटा के द एल्कीन which is having double bond between alpha and beta which is higher degree, वो वाला मेजर होगा। उसी को एक रूल होता है जेड सेव रूल। वर्डिंग डिफरेंट है बट इट मींस द सेम थिंग व्हाटएवर वी हैव रिटन। ठीक है, जेड सेव रूल। एक सेकंड, जेड सेव मत लिखिए आप लोग, जनरली इसको सेटजेफ बोला जाता है। रूल, इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट जिसका नाम ऐसे दिखता था वो जेड सेव, बट उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है सेटजेफ। ओके, सेटजेफ रूल, इट वाज गिवन बाय जेड सेफ, है ना, जेड सेफ नाम है आदमी का, उसको प्रोनाउंस करते हैं सेटजेफ। क्यों करते हैं पता नहीं है।
What is the set rule? It says that more substituted alkene is more stable and therefore it is the major product in beta elimination. ठीक है, more substituted product कैसे मिलेगा? If you are having the beta which has more alkyl groups attached to it, तो उसकी डिग्री हायर हो जाएगी. That is why it will be more substituted. This is sets the rule. इसको लिख लीजिए. Then you write some remarks. Remarks में पहला पॉइंट लिखिएगा. Rate of dehydrohalogenation. ठीक है. If we are going to compare the halogen, we are going to compare the halogen. यानी कि आपके पास अल्काइल ग्रुप सेम है और हाइड्रोजन की कंपेयर कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के केस में इट इज गोइंग टू, अगर हाइड्रोजन को देखें हम, देन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हाइड्रोजन. दैट मींस आयोडीन, दैट मींस इफ यू हैव आर आई इट विल बी फास्टेस्ट, फॉलोड बाय आर बी आर एंड फॉलोड बाय आर सी एल. ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल आ जाए आयोडीन, तो ये फास्टेस्ट हो जाएगा, बी आर, उसके बाद can see the alkyl group is same, halogen change हो रहा है. तो if you have to compare the halogen, that is going to be directly proportional to the size of the halogen atom. उसके बाद अगर alkyl group compare करने की बात आ जाए, alkyl group, then rate it is directly proportional to rate, it will be directly proportional to the degree of alpha carbon, है ना. alpha carbon की डिग्री क्या है? So in this case 3 degree is the fastest, followed by 2 degree and then followed by 1 degree. ठीक है, तो अगर हम इस केस में देखें, so here also you have 4 carbon atoms, 1 2 3 4, और यहाँ पे Br लगा हुआ अगर आपके पास है, this will be fastest. अगर Br आपके पास यहाँ 2 डिग्री कार्बन पे लगा हुआ है, this will be second fastest, and last will be if you have Br in the first carbon atom. ठीक है, please write this down. Raise your hand once you're done. The rest are waiting for you. See you, please. ये तो हो गया आपके पास अल्काइल हाइड्राइड वाला. ठीक है, राइट द थर्ड method of preparation from alcohols.
ठीक है, इस रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, बिकॉज वाटर इज रिमूव फ्रॉम द मेन कार्बन चेन। सो व्हाट हैपेंस हियर, प्लीज सी, आपके पास सिमिलर केस होगा, कार्बन विथ, लेट अस सपोज यू हैव कम से कम एक हाइड्रोजन कार्बन के पास होना चाहिए, ठीक है ना, the other two can be any other groups also, so it doesn't matter, but it should have at least one hydrogen। उसके बाद आपके पास इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, एंड देन यू हैव OH ग्रुप, है ना, ये अल्कोहल हो गया। नाउ if you react alcohol in the presence of an acid with some heat, then where यहाँ पे भी वही होगा, the same thing is going to happen here। सबसे पहले OH निकलेगा यहाँ पे, and then the hydrogen will move on, and you are going to get CH2 double bond CH2 plus H2O, ठीक है। Now this dehydration of alcohol, dehydration of alcohol also occurs via Sedgwick rule, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का, वो भी कैसे होता है, सेड्जेफ रूल के मुताबिक होता है। दैट इज व्हाई यू विल राइट द मेजर प्रोडक्ट। कैसे होगा, you have four carbon atoms like this, OH here, in the presence of H plus and heat, what is going to happen, you will make this, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए अल्फा कार्बन, you will identify the alpha carbon, this is your alpha, this is beta 1, this is beta 2, this is 1 degree, this is 2 degree, you will make everything as it is except the OH, alpha और beta 1 के साथ डबल बॉन्ड, then another product will be everything as it is except the OH, alpha और beta 2 के साथ, and beta 2 वाला major होगा because higher degree, and this will be minor। same rule also, यहाँ पे भी जो rate होगा, rate of reaction, this will be highest for 3 degree carbon, followed by 2 degree carbon, and then followed by 1 degree carbon। Then guys लिखिए आप लोगों ने, ठीक है। Write the fourth method of preparation, this is from vicinal dihalide, from vicinal dihalide। what is vicinal dihalide, देखिए, अगर आपके पास दो कार्बन आटम हो जाए और दोनों कार्बन आटम पे हाइड्रोजन लगा हुआ हो, ठीक है, नो मैटर व्हाट ग्रुप्स आर अटैच्ड हियर, उससे मतलब नहीं है। अगर इफ यू आर हैविंग टू हाइड्रोजन एटम्स ऑन द एडजेसेंट कार्बन, उसको क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। डाइहैलाइड क्यों, बिकॉज देयर आर टू हाइड्रोजन एटम्स। विसिनल क्यों, बिकॉज दे आर इन द विसिनिटी, ना, ये दोनों के एक दूसरे के आसपास है। नेबर्स को विसिनिटी बोलते हैं, आसपास को विसिनिटी बोलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज विसिनल डाइहैलाइड। नाउ व्हेन दिस टाइप ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है, सो दीज आर द टू कार्बन एटम्स और दोनों पे Br लगा हुआ है, you react this with Zn and you will get CH2 double bond CH2। कितने कार्बन आटम से, दो कार्बन आटम, उन्हीं का एल्कीन बन जाएगा, ठीक है, प्लस यू विल गेट Zn Br2। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन प्लस जिंक, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन आटम्स, चार, दोनों क्लोरीन्स को निकाल दीजिए और जहां जहां क्लोरीन लगे थे उनके बीच में डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, SNO पीसल में गाइस? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, sir. Same thing will occur if you have double bond with
You also write the same thing without the Br, double bond. तो आपको क्या मिल जाएगा, जिंक ब्रोमाइड. Done, guys? हाँ. Are you Yes, guys sir. done? Okay. ठीक है. Right. Next, chemical properties. Physical properties is similar to that of alkenes. Alkenes में जो चीज हमने देखी ना, जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करती है बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, है ना. एंड alkenes आर नॉट soluble in water, they are soluble in benzene like solvent. सेम चीज है यहाँ पे भी. ठीक है, they have similar properties as that of alkenes. Right. Next, chemical properties. देखिए, जब भी आपके पास डबल बॉन्ड आ गया ना, व्हेन यू हैव एल्कीन यू हैव डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड जब टूटता है तो इफ यू रिमेंबर इट इज एडिशन रिएक्शन. तो जनरली यहाँ पे आपको एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा. ठीक है, द फर्स्ट वन इज हाइड्रोजनेशन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, इसका एक और नाम होता है हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस रिएक्शन इन द एल्कीन्स पार्ट. एल्कीन में हम लोगों ने देखा था, इफ यू हैव कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे आपके पास मान लीजिए H2 है इस केस में, and you react this with H2 in the presence of nickel, platinum or palladium, then you get what? You get an alkane, CH3CH3. ठीक है, if you have something like this, a double bond here, you add H2 in the presence of palladium, platinum or nickel, you will get alkane with same number of carbon atom. So hydrogenation of alkene, it will forms alkane with same number of carbon atoms. ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ. इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा सेकंड, हैलोजनेशन या फिर एडिशन ऑफ हैलोजन. एडिशन ऑफ हैलोजन में क्या होगा? वी आल्सो कॉल दिस हैलोजनेशन. CH3. अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो एंड इफ यू आर रिएक्टिंग दिस विद X2, तो आपको विसिनल डाइहैलाइड मिलेगा. पाई बॉन्ड टूट जाएगा एंड यू विल गेट CX बॉन्ड. ठीक है, देयर विल बी सम अदर ग्रुप्स, उसके ग्रुप्स के बारे में हमने नहीं लिखा है. दोस ग्रुप्स विल बी एज इट इज प्रेजेंट, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं. So what you get? You get vicinal dihalide. Vicinal dihalide. Right? You start with alkene and you get vicinal dihalide. Now there is an important reaction. For example, you have something like this. You have alkene and you have bromine water, Br2. And this bromine water, which is in aqueous medium, it is reddish brown. When Br2 reacts with alkene, it gives vicinal dibromide. And this vicinal dibromide, it is colorless. Okay, this is colorless. Here you can see, you can write a point. When
alkene is treated with bromine water, it loses its reddish brown color. Reddish brown color. ठीक है, it's similar. The reaction is shown by alkynes. बाकी तो कर लेंगे ना, Br2 की जगह अगर Cl2 आ गया तो ClCl लगा देना, आपको आयोडीन आएगा तो आयोडीन आयोडीन लगा देना, बट Br2 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ टेस्ट, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है. So alkenes, it gives positive bromine water test, and what is a positive test? When it decolorize the bromine water. When alkene decolorizes the bromine water. Make sense? Yes or no? Please tell me, Rishita, Akib, Khadija, Amna. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड. यहाँ पे देखिए आपको, इन दिस केस आपके पास क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा. लेट अस सपोज यू हैव प्रोपीन. इन द प्रीवियस टू केसेस ना, आपके पास सिमेट्रिकल रिएजेंट था, H2 था. H2 कैसा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन. ओके, और जब Br2 होता है तो Br इज बॉन्डेड विथ Br. तो दीज आर सिमेट्रिकल ना, Yes, Br sir. एंड Br, करेक्ट, ठीक है. अच्छा, अब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हलाइड आ चुका है विच इज हैविंग HBr फॉर एग्जाम्पल, नाउ दिस इज अनसिमेट्रिकल, करेक्ट है? यस और नो? प्लीज टेल मी. Yes, sir. रिशिता, आपका स्क्रीन नीचे है क्या? No, sir. फिर आप नीचे क्या कर रहे होते हैं? I was writing व्हाट आर यू राइटिंग? the when alkene is treated with bromine. I didn't write it before. अच्छा, तो आप लिख लीजिए ना, पहले तो बता दिया कीजिए. आई विल वेट, ओके गाइस, हमको जल्दी नहीं है कुछ, आप लिख लीजिए आराम से, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन. Done, sir. ठीक है, ध्यान से जरा देखिएगा, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. इन दिस केस वी हैव अनसिमेट्रिकल रिएजेंट. इधर हाइड्रोजन है, उधर ब्रोमीन है हमारे पास. देन व्हाट कैन हैपन, डबल बॉन्ड कार्बन है ना, तो आपके पास दो प्रोडक्ट मिल सकता है आपको. आपको या तो मिल जाए ब्रोमीन इस तरह से, ठीक है, ब्रोमीन अटैच हो जाए यहाँ पे, और हाइड्रोजन ऑब्वियसली इट विल गो टू द अदर कार्बन एटम, और द अदर केस विल बी ब्रोमीन आपके पास इस कार्बन एटम के पास आ जाए. मेक सेंस? आपके पास दो है ना, ये कार्बन एटम के पास भी डबल बॉन्ड है और दिस ब्लू कार्बन. So you will get two products. Either the bromine will attach on red and the bromine will attach on the blue carbon atom. Make sense? Yes, no, please tell me guys. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है. अब आप लोग प्रोडक्ट बना लेंगे. You guys can make the product. Yes or no, please tell me. ये मतलब द नंबर ऑफ दो प्रोडक्ट तो बना सकते हैं ना, बताइए. Yes, sir. उसके बाद डिग्री देख लीजिएगा. ये अल्फा कार्बन है ना, इस अल्फा कार्बन दिस इज 2 डिग्री, और यहाँ का अल्फा कार्बन क्या है? 1 डिग्री, करेक्ट. Yes, sir. तो जो ज्यादा डिग्री वाला होगा वही वाला मेजर होगा. अभी आप लोग पहले ये सीखिए हाउ टू राइट डाउन द प्रोडक्ट्स, और कौन सा होगा मेजर, कौन सा होगा माइनर, ठीक है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का केस आ गया, सी हियर. नाउ कैन यू सी दैट दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन? ये देखिए सिमेट्रिकल है ना,
अगर डबल बॉन्ड को ब्रेक करें तो दोनों तरफ क्या आपके पास सेम चीजें हैं, राइट? ये सब सिमेट्रिकल एल्कीन दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, when you sir. have देखिए डबल बॉन्ड के इस तरफ भी CH3 और उस तरफ भी क्या है, CH3 है. सो इन दिस केस यू डोंट हैव टू वरी, कहीं पे भी आप लगा दीजिए हाइड्रोजन एटम को, इट वोंट मैटर. ठीक है. दिस इज ऑल्सो टू ब्रोमो ब्यूटेन, और अगर आपने यहाँ पे भी लगाया होता यहाँ पे भी, तो तब भी क्या होता, टू ब्रोमो ब्यूटेन. सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर यू डोंट हैव टू वरी फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन. आपको सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्कीन की केस में देखना होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस प्लस सी एफ HBr. ठीक है. सो आपके पास बताइए, देखिए दो प्रोडक्ट मिलेगा, करेक्ट है? यस और नो? Yes, sir. एक में ब्रोमीन अटैच ऑन द फर्स्ट कार्बन और दूसरे में ब्रोमीन अटैच ऑन द सेकंड कार्बन एटम. ठीक है. उसमें डिग्री देख के फिर आप लोग टेल मी व्हाट इज द मेजर एंड माइनर. डू दिस वन. सेंड द आंसर ऑन माय व्हाट्सएप. आई विल गिव यू गाइस 2 मिनट्स फॉर दिस. अच्छा पूरा लिख लीजिए पहले, लिख लीजिए आराम से, उसके बाद हमको भेज दीजिए. ठीक है. ज्यादा टाइम मत लगाइएगा. कॉपी द फर्स्ट टू.
यस, करेक्ट है आंसर। वेरी गुड। रिशिता, वेटिंग फॉर योर आंसर। व्हाट हैपेंड रिशिता, नहीं कर पा रहे क्या? Sir, I'm getting only one answer, not major and minor. देखिए, एक तो बी आर, देखिए डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन एटम में बताइए। सपोज 1 2 3 4, डबल डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के बीच में? 1 and 2. 1 और 2, है ना? तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, मेक एवरीथिंग एज इट इज एक्सेप्ट द डबल बॉन्ड बनाइए। ठीक है, और बी आर चला जाएगा फर्स्ट कार्बन पे। ठीक है, So this is supposed to be the second carbon because it has more degrees. अरे हाँ, तो दो प्रोडक्ट तो बनाने हैं ना हमें। एक तो ये बनेगा बी Okay. आर लाइक दिस फर्स्ट कार्बन के साथ, और दूसरा बनेगा इस तरह से। दिस विल बी, ये मेजर हो जाएगा, बस आपने मेजर बना दिया सिर्फ। Yes, sir. अच्छा हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, फाइन। So should I send it to you? नहीं नहीं, ठीक है, अभी आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्यू क्वेश्चंस, वो भेजिएगा आपको। ठीक है, चलिए, सी हियर गाइस, लेट अस सपोज यू हैव, ठीक है, सवाल सही से लिखिएगा, 2 क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद चाहिएगा। ये से साकिब, 4 बॉन्ड ही तो बन रहे हैं ना, 1 2 3 4, हाँ हो सकता है, आराम से हो सकता है। Okay, sir.
So when we replace like Br with CH3, will it be CH2Br? रिश्ता हमने कहाँ पे CH3 को रिप्लेस किया Br से? वो सेकेंड क्वेश्चन। नहीं नहीं, इससे अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, कभी भी हमने ये बोला क्या दैट यू हैव टू रिप्लेस समथिंग विद समथिंग? हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए? ड्रॉ एवरीथिंग एज इट इज एक्सेप्ट द डबल बॉन्ड, है ना? करेक्ट है। और उसके बाद यस। डबल बॉन्ड दो कार्बन एटम के बीच में, पहले कार्बन के साथ दिया, दूसरे कार्बन के साथ दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलने चाहिए। बात समझ में आ रही है? ड्रॉ यस। एवरीथिंग एज इट इज एक्सेप्ट द डबल बॉन्ड एंड देन अटैच Br ऑन फर्स्ट कार्बन। उसके बाद दूसरा बनाइए, ड्रॉ एवरीथिंग एक्सेप्ट द डबल बॉन्ड एंड देन अटैच द Br ऑन द सेकंड डबली बॉन्डेड कार्बन। मेक सेंस रिश्ता? Yes, so I attach Br with like the first carbon and the second question is already attached to CH3, so I attach the same thing to Br. हाँ, अटैच कीजिए, उसमें क्या हो, तो लकीर बनाने में दिक्कत? हाँ, CS बिल्कुल ऐसे ही बनाइए आप, ऐसे बनाइए। ठीक है, CS3 से आपने बनाया, यहाँ से ऐसे करके Br अटैच कर दीजिए, दैट्स इट। Yes, sir. ठीक है। देखिए, बस चार बॉन्ड बनने चाहिए, चार बॉन्ड बन रहे हैं ना, चार से ज्यादा तो नहीं बन रहा है। मेक सेंस ना? चार से ज्यादा नहीं बनना चाहिए, दैट्स इट। Yes, sir.